Hello students, so welcome back to a new video. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिक्रीज ऑफ आयोनाइजेशन. इन द प्रीवियस टॉपिक we have discussed about electrolytes and its type. So in today's topic we'll be discuss about the decrease of ionization. So first of all we'll know what is decrease of ionization. First we have to know हम किसी भी चीज़ के डिक्रीज निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जिस चीज़ का डिग्री निकालते हैं वो कितना हुआ डिवाइडेड बाय टोटल. तो यहाँ पे डिक्रीज ऑफ आयोनाइजेशन मीन्स हमारा कितना मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हुए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. इट्स सिंपल एंड वी हैव टू राइट इट इन इंग्लिश. सो it is defined as the ratio of the number of molecules which splits into ions. हमारा कितना मोलेकुल आयन में स्प्लिट्स हुए और आयोनाइज्ड हुए to the total number of molecules of the electrolytes divided by total number of molecules of electrolyte, and it is denoted by alpha. The decrease of ionization is symbolically denoted as alpha, and mathematically degree of ionization alpha is equal to number of molecules splits into ions. मैंने बोला था हमारा कितना मोलेकुल स्प्लिट्स हो रहे हैं और आयोनाइज हो रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोलेकुल्स. सो अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोलेकुल्स स्प्लिट्स इनटू आयंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोलेकुल्स. देन नेक्स्ट, for strong electrolytes alpha is nearly equal to 1 or alpha is equal to 1 due to the substance is almost completely always. हमारा strong electrolyte किससे कहा जाता है, तो electrolyte which has more capacity of ionize the molecules and it's ionized completely और 100%. यहाँ पे हमारा molecules अगर 100 molecules है तो करीब 99 molecules हमारा splits होता है. तो number of molecules splits is nearly equal to the total number of molecules. So the degree of ionization of strong electrolyte is nearly equal to 1, or we will consider it as 1. And for the weak electrolyte, alpha very low value, because as we know in case of weak electrolyte the number of molecules splits into ion is very less. So for the weak electrolytes the value of alpha is very low as the substance is poorly ionized. Then we have to know the factors affecting degree of ionization of an electrolytes. हमारा आयोनाइजेशन इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन को कौन से फैक्टर हमारा अफेक्ट करते हैं, तो बेसिकली हमें हमारा 3 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं: डाइल्यूशन, टेम्परेचर एंड एडिशन ऑफ सॉल्ट कंटेनिंग द कॉमन आयन. हमारा 3 फैक्टर जो है वो हमारा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं. तो हम इंडिविजुअली इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे. सो देयर आर जनरली 3 different factors are depend on the degree of ionization of an electrolyte. There are 3 factors which depends on the degree of ionization. The first one is dilution, then another one is second one is temperature, and the third one addition of salt containing the common ion. Now we'll be discuss about dilution. So we'll be discuss about how dilution affects the degree of ionization. The degree of ionization of weak electrolyte become increase with the dilution. हमारा अगर डाइल्यूशन करते हैं तो हमारा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज करता है. सो द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बिकम मैक्सिमम एट द इन्फाइनाइट डाइल्यूशन. अगर हम डाइल्यूशन करते हैं इलेक्ट्रोलाइट को तो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज करता है. बट उसका अपोजिट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द डाइल्यूशन हैव वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन. सो द dilution does not affect much more in case of strong electrolyte, but with increasing dilution the degree of ionization of weak electrolyte increases, and the ionization is directly proportional to degree of ionization. हमारा जितना ज़्यादा आयोनाइज, अगर ज़्यादा मोलेकुल्स आयोनाइज्ड होंगे तो हमारा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा. अगर कम मोलेकुल्स आयोनाइज होंगे तो हमारा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कम है. देन वी विल बी डिस्कस अबाउट द फैक्टर टेम्परेचर. So most of the electrolytes are endothermic in substance. Most of the electrolytes are endothermic. Endothermic means they get heat energy
In such cases, the degrees of ionization become increase with increase in temperature. हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारा टेम्परेचर का इंक्रीज के साथ साथ डिग्रीज ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज करता है. कैसे कि हमारा अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो हमारा जो सब्सटेंस का मूवेबिलिटी है वो इंक्रीज करता है, उनका मोबिलिटी इंक्रीज करता है. रैंडमली द आयंस विल मूव इन द इलेक्ट्रोलाइट. अगर हमारा आयंस का मूवमेंट ज़्यादा होगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन भी ज़्यादा होगा. तो उस वजह से अगर हमारा जो एंडोथर्मिक सब्सटेंस में टेम्परेचर का इंक्रीज किया जाता है तो मोबिलिटी ऑफ आयंस बिकम मोर ड्यू टू हायर टेम्परेचर and they become in and the degree of ionization will be more. And but in case of exothermic means which releases heat energy. अगर वो एक सब्सटेंस से हीट एनर्जी रिलीज करेगा तो उसका मोबिलिटी ऑफ ions will be less in the electrolyte. So there will, if there is mobility is less, then there will be small amount of molecules will be ionized. So the degree of ionization will be less in case of exothermic reaction, and the degree of ionization is high in case of endothermic reaction. We have to remember this. Then the last one is addition of salt containing the common ion. If we consider the addition of salt containing common ion, what is common ion? In case of weak electrolyte, the degree of ionization becomes decreased if a salt having a common ion is added to it. हमारा weak electrolyte में क्या होता है, हमारा बहुत कम मॉलिक्यूल्स स्प्लिट्स होते हैं हमारा आयंस में. लेकिन हम अगर यहाँ पे क्या करें, एक ऐसे सॉल्ट डालें जिनका कॉमन आयन है. लेट वी कंसिडर NaCl. हमारा एक सब्सटेंस है आयन इलेक्ट्रोलाइट जिसमें Na प्लस है. हम वहाँ पे हम एक सॉल्यूशन डालते हैं NaCl तो वो फॉर्म करेगा क्या, Na प्लस मॉलिक्यूल्स. देन अगर इलेक्ट्रोलाइट में पहले से Na प्लस का कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो उसका बाद से Na प्लस का वो आयोनाइज नहीं होगा ना, तो उस वजह से उसका आयोनाइजेशन डिक्रीज होगा. डिक्रीज ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ NH4OH इज डिक्रीजेस व्हेन a little amount of NH4Cl salt is added to it, and if there is no common ion then there will be increase in the ionization and it become increases. तो आज के लिए इतना. तो इन द नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिस्कस अबाउट Ostwald's dilution law. So please like, share and subscribe to our channel.